In this lecture, we will discuss about analytic function, definition of analytic function. Analytic function. So we define as a function W is equal to fz of a complex variable z which is single valued और आप कह सकते हैं उसको वन वैल्यूड which is a single valued and differentiable. Single valued and differentiable at each point of the domain D. Each point of the domain D. So then fz is said to be analytic, in the domain D. In the domain D. Now we remember some points, that means the exceptional points. अब इसमें कुछ exceptional cases होते हैं. So the exceptional points are called singular point, जहां पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है. Singular point, or generally we can say that the singularities of the function, Analytic function is also called regular. So the term, basically we write down the terms regular or holomorphic. The term regular or holomorphic are used as a synonyms with the term analytic. Now, so we take a polynomial. So a polynomial in Z can be expressed as so fz is equal to p0 plus p1z plus p2z square plus p3zq plus and so on plus pn z raised to the power n. So we can see that this polynomial have the derivative. So this has the derivative at every point.
at every point. So that means when we find f dash z, so this can be written as p1 plus 2 p2z plus 3 p3z square plus and so on plus last term we can write down n pn z raised to the power n minus 1. सो हम कह सकते हैं कि जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन से दैट हैंस जो एफ जेड फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल है एफ जेड इज एनालिटिक एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट at every point in the complex plane. Every point in the complex plane. Now, sometimes we have given the function in this form. So, if function is given in the form of fz upon fz, so we clear fz is not is equal to 0. Okay, so if fz equal to 0, so we say that we put fz is equal to 0, so then the given function is analytic except fz is equal to 0. तो fz equal to 0 के अलावा जो फंक्शन होगा वो एनालाइटिक होगा. तो fz equal to 0 पे जो पॉइंट्स मिलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स. अब जैसे कोई भी एग्जांपल लिया हमने कि कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. दिस इज द एग्जांपल z प्लस 2 अपॉन z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1. तो हाउ मेनी सिंगुलर पॉइंट इट हैज. तो इट हैज 3 सिंगुलर पॉइंट्स. तो ये क्या हो गया हमारा जो एफ जेड है स्मॉल एफ जेड वो क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टोराइज करेंगे तो जेड की वैल्यूज क्या आएंगी. तो 0 आएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा. तो दिस फंक्शन हैविंग 3 सिंगुलर पॉइंट्स. तो वी कैन से दैट दिस हैज 3 सिंगुलर पॉइंट्स. 3 सिंगुलर पॉइंट्स. तो जहां फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा. तो मीन्स जेड इक्वल टू 0 हो गया और z इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा. तो द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इन दीज 3 points. So except these 3 points, the function should be analytic. Now, suppose we have a w is equal to fz or fz equal to z raised to the power 1 by 2. So is this function is analytic or not? So this is also not an analytic function, not a analytic function, because this is not a single valued function. This is not a single valued function. डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पर वह सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए एनालिटिक फंक्शन. तो एनालिटिक फंक्शन के लिए जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक एवरीवेयर क्योंकि इट्स डेरिवेटिव इज ऑल्सो एग्जिस्ट. तो दिस कैन बी 2z प्लस 2 and we can say that function is analytic everywhere. Now, for obtaining the analytic function by using some conditions that are known as the Cauchy-Riemann condition. So we will discuss in next lecture the CR conditions.